इसका छोटा सा जो है हाय गाइज, फाइनली अनदर वीडियो। मैं एक शेड्यूल मेंटेन करने का ट्राई कर रही हूँ विच इज़ ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो अभी मैं इसे अनाउंस नहीं कर रही हूँ कि मैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे वीडियो डालूंगी, बट इफ़ यू आर माई लाइक OG ऑडियंस यू कैन एक्सपेक्ट वीडियोस। यू गाइज नो मैं बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाती हूँ, एंड आई नो यू गाइज लव माई लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। आई एम लाइक trying my best to create content for you guys. Today I'm going to try out all the new launches from Mars. Mars ने बहुत सारी नई चीज़ें लॉन्च की हैं, उनके ब्लेंडर्स, उनके फाउंडेशन, उनके कैंडिलिशियस लिप ग्लॉसेस. I am very excited to try them out. So yes, if you're excited to see what I got from Mars new launches, then please keep on watching. Alright, so I'm going to start off with the eyebrows. उनके eyebrows के लिए मेरे पास है ये O-Brow eyebrow pencil. काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत sleek सी लग रही है. So let's just give it a shot. मेरे पास उनका ब्रश सेट भी है which is again newly launched. This is how it looks like. बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में आता है. So curious to see how it actually looks. So this is how the pencil looks like. This is how the pencil looks like. It has a spoolie and of course the pencil. I want to see, yes, I love this kind of pencil जिनकी बहुत ही ज़्यादा sleek look होती है, बिल्कुल भी thick नहीं होती हैं ये pencils. So I really love that about these. I'm just gonna start off with filling them in. What? Look at this. Can you see? It just creates hair-like strokes. Wow. Shade dark brown. It's only for 230 rupees, you guys, and it's so pretty, honestly. What the hell? The formula, the pigmentation, the blendability for only 230 rupees. मुझे पर्सनली ऐसी पेंसिल्स बहुत पसंद है जो बिल्कुल पतली सी टिप की हो. मुझे ज़्यादा थिक पेंसिल्स नहीं पसंद बिकॉज वो मतलब hair like strokes नहीं create कर पाती हैं फिर. So good, and the color is just so perfect. So to make my eyebrows look even, I just like to connect the lower part, upper part like that. By the way, if you're wondering, yes, Mars sent this PR to me, and they are very sweet because I wanted to create this video and they are just so helpful. Not sponsored at all. So I'm gonna give my honest reviews like always, and I love it. So once I'm done with the balancing, I just rub these lines off. By the way guys, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यहाँ कुछ काट गया और मैंने अपने बाल अच्छे से कर्ल किए थे. You can see they just look so nice. और जैसे मैंने कर्ल किए साथ ही लाइट चली गई, which was so annoying. But फिर मैंने 10 मिनट patiently wait किया and then light came. 100% recommended. This is like perfect. Okay, this is perfect. You just go grab your hands on this. Too good. Next up I have the concealer. Concealer उनका कुछ new launch नहीं था, so I have the old one. You guys know I haven't really liked it a lot, but I'm gonna just give another shot to this. So honestly I don't like this a lot because of two reasons. First of all, it is super thick. It's so thick. I don't like thick concealers. And the second thing is I just don't like the applicator. Honestly मुझे ऐसे के applicators नहीं पसंद. LA Girl का भी ऐसा ही है applicator, but मुझे ऐसे applicators नहीं पसंद और मुझे thick concealers नहीं पसंद because they just feel so thick on the skin and feel heavy on the skin. So these are the two reasons. I'm just going to carve my eyebrows with this now, and I'm just going to prime my eyelids also. See, this is so thick that it just feels like dry, so I don't like it. Now I'm going to blend that out. I have their small beauty blenders, very cute. अभी तक मैंने मार्स के ब्यूटी ब्लेंडर्स नहीं ट्राई किए. ब्रशेस तो दे आर सो गुड, स्पेशली वो जो गोल्डन हैंडल वाले हैं. अमेजिंग ब्रशेस. नाउ लेट्स ट्राई द ब्लेंडर्स. मैं इसको हल्का सा, इस पर क्यूट सा ऐसे मार्क बना हुआ है, बहुत ही क्यूट. इसको हल्का सा हम वेट कर लेंगे. ये है मार्स का सेटिंग स्प्रे. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये. यू कैन सी ये ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. ऑफ कोर्स ये तो पैकेजिंग में ही ड्राई हो रखा था, तो मुझे ये वाला इतना पसंद नहीं है कंसीलर इनका. सेम फॉर द फाउंडेशन गाइज, बट वी आर गोना स्टिल गिव इट अ शॉट, अनदर शॉट. आई थिंक इनका फाउंडेशन मैंने 1 या 2 बार ही यूज़ किया होगा. ओके, द ब्लेंडर्स आर वेरी सॉफ्ट. आई लाइक देम. इनर कॉर्नर्स को पहले ही ब्राइटन कर लेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. यू गाइज नो देयर इज अ थिंग कॉल्ड हेयर डे, गुड हेयर डे. देयर इज ऑल्सो अ थिंग कॉल्ड good eyebrow day. So I'm not having a good eyebrow day today because I don't know, I feel like this one looks a little bit more thick and not that good. It's okay, we'll just work with what we have. Next up I want to do the base first. For the primer, I again don't have anything new. I have this one from Mars. This is Illuminati
बेस एंड दिस वन इज़ रियली नाइस, बट द ओनली थिंग इज जब आप इसको टिल्ट करते हो तो प्रोडक्ट अपने आप निकलता है, आपको स्क्वीज़ नहीं करना पड़ता प्रोडक्ट, दैट्स वेरी अनोइंग, आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकल जाता है बाहर। हम इसको हल्का हल्का सा जो है बेस पे स्किन पे लगा लेंगे। इसकी जो टिंट है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा टिंट मिलता है आपको इससे। आई जस्ट लव वन, दिस इज लाइक अ स्ट्रोब क्रीम बट इट्स सो प्रिटी। आई जस्ट शो you after applying it on half of my face. It gives you ultimate glow. Now see, this is the side with the strobe cream. Love it. This one is without any strobe cream, which is like matte and not that dewy. By the way guys, I will link all the products in description. So yeah, ये वाला सारा waste हो गया product. This is why इसका छोटा सा drawback है इस product का. Really nice. It's also very hydrating also. The strobe cream is not like just application. It's like a moisturizer and very nice. Hydrating strobe cream, I like it. Next up, I have their new foundation shades. Actually, they have introduced new shades in the market. ये वाला था shade number 3 जो मैंने last video में try किया था, which was like too light for my skin tone. But otherwise the formula is great. It is a little bit thick as per my liking. But I got darker shades this time. This is 06 and this is 07. So I'm gonna try out which shade suits me the best. This is the shade 06. Looks exactly the same. No, this one's dark. 06 is dark. 07 will be, I think, more darker, of course. Alright, this is amazing. This is also dark. Yeah, let's just apply this one, 06. I'll actually swatch all the shades for you guys. This one is 06, the one that I'm swatching right now. Yep, very close. Then we have 03. The foundation also oxidizes a bit. मुझे last Mars वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा hate मिला था because मैंने बहुत light foundation use किया था, which was this color, but I had no other option because the brand actually sent me this one. So yeah, this is also one drawback of being an influencer or creator, you must say. This one is another foundation in the shade 07. Let's swatch this one as well. This is 07. Okay, so बहुत ज़्यादा drastic फ़र्क है तीनों शेड्स में, but I think 06 is like closer to my skin tone. I'm actually gonna mix all three of them because I'll tell you why. Because it will create my shade. I know that for sure. I told you it is going to oxidize a little bit, so it's very thick though, like super thick coverage it has. I like more so like a liquidy coverage, but this one is also fine. But I really appreciate कि उन्होंने new shades introduce किए हैं इस foundation में. I also got their velvet sponge, which is microfiber velvet beauty blender. I'm also gonna try this one out, and my skin feels very dry because of the foundation. स्पॉन्ज को वेट करने के बाद आई एम गोइंग टू ब्लेंड एंड ब्लेंड. दिस वन इज नॉट दैट सॉफ्ट. बाकी मैंने पानी में डैम्प नहीं किया, मैंने सेटिंग स्प्रे के साथ ही डैम्प किया है. नोप, it's too dry. I think I need to like dampen it with the water. I'm actually gonna unbox. This is a perfect time to unbox this. This is their brush set, which I love. I love the luxurious packaging they are providing. And oh my god, the bristles are super soft. This is called the foundation blending brush, and look at the packaging. I love it. I'm just gonna blend my foundation इससे पहले कि ये dry हो जाए. Wow, nice. I wanna build up the coverage, so I'm gonna use the shade 06 and I'm gonna mix it with the 03 and then just mix everything. And just firstly apply it on the neck. Mind you, this is like very full coverage foundation, as it says on the packaging also that it's very full coverage, high coverage. I'm not going to lie, I'm currently like, I'm loving this concoction of two shades. It just looks so pretty. Honestly, I'm obsessed with the coverage it gives. It has like such nice good coverage. Just look at that. And this one is for rupees 380. Are you kidding me? I must say, जो लोग high end products नहीं afford कर सकते, वो Mars definitely afford कर सकते हैं, and they can get like professional results using this. I'm gonna try my best to create like a professional makeup artist look using these products, but I'm gonna try my best. I think I can deliver that today because look at this. Next up, I'm actually gonna try and give this another shot because मुझे पता है Mars के सब products बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं and बहुत ही अच्छी quality के हैं. So I'm gonna actually
अच्छे अमाउंट में यूज करूंगी। टोनर लिया है मैंने रोज वाटर और इसको ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। यू कैन सी थोड़ा सा येलो टर्न हो रहा है क्योंकि मैंने ये शेड यूज किया था 07 विच इज लाइक वेरी येलो टोन। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं 03 यूज करूंगी दोबारा से, बिल्कुल ही लाइक हाफ से भी कम पंप लेकर, एंड आई विल गो जस्ट ओवर इट। इट वोंट हेल्प दैट मच बिकॉज वो नीचे येलोनेस रहेगी ही। आई एम गोना हेल्प लाइक ट्राई माय बेस्ट। यू डोंट इवन नीड एनी कंसीलर आफ्टर दिस, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग। फाउंडेशन तो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है बट द पैकेजिंग इज even more pretty and luxurious. Just look at this. What is this packaging, Mars? I love it, love it, love it, love it so much. The packaging is just too good. Like the products are so good. The brushes, oh my god, the brush one, this foundation brush, I'm obsessed. This blender is okay, like you can skip on this because it's a little bit hard. I feel thoda mujhe hard feel hua, but not bad. Okay, now it's the time for the concealer again, which I don't like. This like इट्स ओके, इट्स फाइन, लाइक मार्स को डू बेटर। उनका एक और नया कंसीलर भी है जो उन्होंने लॉन्च किया है बट वो मैंने नहीं ट्राई किया। हम ये वाला एक और इसको जो है शॉर्ट देंगे कंसीलर को, व्हाई नॉट। लेट्स सी अगर ब्रश सेट में इनका कोई कंसीलर ब्रश भी इन्होंने दिया है। ओके, दिस इज वन ब्रश, दिस इज कॉल्ड कंसीलर एंड हाईलाइटर ब्रश। सो या दिस इज अ कंसीलर ब्रश एंड obsessed with the packaging. Let's blend this out. I have another favorite concealer brush, guys. This is like perfectly dense and it's so easy to blend with this. Okay, this one is for 2000 rupees and you get 12 brushes in 2000 rupees in this good quality. I think it's not that bad क्योंकि इसमें वो हर एक ब्रश है जिससे आप एक बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। इसमें वो हर एक ब्रश है अवेलेबल। यू हैव द फाउंडेशन ब्रश, कंसीलर ब्रश, कॉन्टूर ब्लश, हाईलाइटर, आई शेडो, आईब्रोज, हर ब्रश है इसमें। 2000 rupees, it's absolutely worth it. Beautiful. I'm gonna use this wonder fixer which I love this one so much. स्प्रे देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, इसकी खुशबू भी मुझे बहुत पसंद है। ऑनेस्टली मुझे खुशबूदार वाले स्प्रेज इतने पसंद नहीं आते बट इसकी खुशबू मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक है। नेक्स्ट अप आई हैव देयर, आई थिंक वी गोना लाइक सेट the face in place now. So for that I have this one Born to Bake setting powder. I've used it one and I really like it. But इनका जो trend setting loose powder है ना, वो मेरा ultimate favorite है और वो मैं काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। आधे से भी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है वो, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसी से सेट करेंगे। सारी प्रोडक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी गाइज, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये वाला पाउडर भी काफ़ी हद तक आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है। इट्स जस्ट दैट ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है। मुझे पर्सनली ट्रांसलूसेंट पाउडर्स इतने कुछ खास पसंद नहीं आते बट दिस वन इज रियली नाइस। बहुत अच्छे से मैट कर देता है, सेट कर देता है और माय स्किन लुक्स लाइक अ फिल्टर राइट नाउ। इट्स लाइक इंस्टाग्राम फिल्टर। कितने अच्छे से वेट कर दिया, ड्राई कर दिया मेरे फेस को। एक बार और मैं ये यूज करूंगी टू ब्रिंग बैक दैट ग्लो। नेक्स्ट अप आई एम गोना यूज दिस पैलेट विच इज द चंडीगढ़ पैलेट फ्रॉम मार्स। ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइज। जो भी न्यू लॉन्चेस हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। विच इज लाइक ब्रशेज, वी आर यूजिंग द ब्रशेज एट द moment. For this I'm gonna take out the face brushes. By the way, I also got their nail paints. I cannot apply them right now but they are so pretty. Look, I love shades like this. अभी भी मैंने बहुत ही dark सा shade लगाया हुआ है। These are nail extensions by the way. Now I'm using these brushes to create next look. This one is contour brush which we are gonna do right now because we have this one rock garden and I'm just gonna apply this on this brush. साथ साथ हम अपने फाउंडेशन ब्रश को एकदम अपने पास रखेंगे दिल के, ताकि कुछ भी गड़बड़ अगर हो जाए हमसे तो हम अच्छे से उसको ब्लेंड करते हैं। Okay, this side is with contouring. You can see it's beautiful, the shade, everything, and this one is flat. So I'm just gonna do contouring on this side also. It just looks really pretty. Next, I'm also going to blush my cheeks. I'm actually going to use blush brush. Which brush is this? This is I think powder, yeah. So this is a blush brush. I'm gonna take this shade called Juti and then just coat my brush using this. आपको टिप दे रही हूँ, जब आप ब्रश लेते हो और ब्लश लेते हो तो आपको ब्रश को पूरी तरह से कोट करना है। जब ये एक धब्बा सा बन जाता है ना यहाँ पे ब्लश का, तो वो आपकी चीक्स पे भी धब्बा बना देगा। अगर आपका ब्रश पूरी तरह से कोटेड होगा, डोंट वरी अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आप एक बार इसको कोट कर लो, फिर अपने हैंड पे एक्स्ट्रा निकाल दो एंड देन जस्ट अप्लाई इट। इससे क्या होगा, आपको बिल्कुल इवन
एप्लीकेशन मिलेगा ब्लश का। मैंने बहुत देर बाद पाउडर ब्लश लगाया। मुझे ऑनेस्टली पाउडर ब्लशेस से ज़्यादा मुझे क्रीम लिक्विड ब्लशेस पसंद है, बट ठीक है आज हम पाउडर लगाएंगे। एंड आई लाइक टू टेक अ लिटिल बिट लाइक हियर एंड देन जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर, अ लिटिल बिट ऑन द नोज। आई फॉरगॉट टू कंटूर माय नोज, आई डोंट नो व्हाई, सो वी गोना डू दैट यूजिंग दिस बिग आई शैडो ब्रश। यू कैन सी हर टाइप के ब्रशेस हैं इस ब्रश सेट में। एंड जस्ट कंटूर अ लिटिल बिट on the sides. Just looks so nice. यहाँ पे थोड़ा सा harsh हो गया है. I'm gonna take my finger, or you can also take this compact shade from the palette and just blend everything in. And you're done with the nose contouring. It just looks so nice. Oh my god, my base looks amazing and I cannot believe this is all Mars Cosmetics. I don't like my blusher to be like pure, so I'm just gonna take it a little bit. Also guys, let me know what else you guys want to see on my YouTube channel. Makeup tutorials तो आते ही रहेंगे, बट और आपकी क्या डिमांड है वो भी मुझे ज़रूर बताना। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा मैसी हो गया तो इसको क्लीन करने के लिए आई एम टेकिंग द पाउडर। इवन फॉर द नोज कॉन्टूरिंग आई एम डूइंग द सेम। हल्का सा जो है हम इसको बेक करेंगे। एंड नाउ आई एम गोना टेक द पाउडर ब्रश। नाउ टेकिंग द पाउडर ब्रश एंड जस्ट ब्लेंडिंग everything. You can see it looks even more cleaner. And guys, my base looks amazing. I'm gonna use this one more time. This is a very important part of my makeup because I just love using setting spray, because जब भी मुझे बहुत dry और ऐसे tight feel होता है ना, I just put on some setting spray and I'm good to go. Next up, I have these multi-chrome eyeshadows. Now let's move on to the eyes. This is it, guys. These are two new products that I have. This is called Northern Lights. इसका मेरे पास पाउडर वर्जन भी था जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, वो मैं लिंक कर दूंगी नीचे वीडियो को। अभी हम ये वाला ट्राई करेंगे because I'm really excited about this. And actually I like to look for good eye pigments because look at the packaging, you guys. The packaging is screaming. I think ये और ये shade almost like similar है, क्योंकि आज मैं ज़्यादा play नहीं करूँगी आई शेडो के साथ. I just want to use these and ये मैंने बहुत बार यूज़ की हुई है. इसमें से मैं एक आधा शेड का ट्रांजिशन अप्लाई कर लूँगी. Okay, let's watch this. Am I in focus? Oh my god. You remember मैंने शी ग्लैम की यूज़ किया है एंड काफ़ी सिमिलर शेड है, बट दिस वन इज़ टू गुड. दिस वन इज़ टू प्रिटी. Oh my god, look at that pigment. Then I have the shade Alaskan Aurora. I'm just gonna try that. Mars is like becoming my favorite brand day by day. इतना affordable और इतना अच्छा कैसे हो सकता है? I just can't believe. This shade was Scottish Serenity and this one is called Alaskan Aurora. This is a beautiful blue chrome. Did you witness this beauty? Look at that. Both are very similar. I'm actually going to go in with this one is in a pan, Northern Light. This is the shade Finland Flash and इसको भी मैं एक बार swatch करके देखना चाहती हूँ कि ये कैसा शेड है. Okay, this one is in a pan formula. I definitely like the other formula. ये है pan वाला और ये है liquid. Of course, liquid वाला is better than the pan formula, so I'm gonna try that one on the eyes. Today I'm gonna try out Scottish Serenity on the eyes. You guys know it already that I'm gonna try this one directly. It's one and done eyeshadow. You guys, did you guys witness that? I'm so happy right now. Mars ना इंडिया का शी ग्लैम है. Like I'm giving this title to Mars because मुझे Mars के प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहे हैं एंड इनका प्राइस एग्जैक्टली शी ग्लैम, बट द क्वालिटी आई थिंक इज मच बेटर देन दैट. आई एम ऑब्सेस्ड. यू कैन क्रिएट लाइक सच अ प्रोफेशनल लुक यूजिंग दिस. ओह माय गॉड, दिस इज योर साइन टू जस्ट गो एंड ग्रैब दिस right now. Like people make fun of influencers, beauty creators, that they give this kind of like reaction on these products, but we are so obsessed with makeup, you guys. We have to like, it just comes out naturally. We are not doing it on like purpose. It just comes out naturally because we are obsessed with makeup and we are madly in love with makeup, so we just can't do anything about it. Like, did you guys see Nancy Tyagi's makeup? It was done like full on like Mars makeup. अगर मैं उनका makeup करती ना तो I think I would have done like something like this on her. You don't need more. My soul needs more, so I'm applying more and more. So I'm just gonna close the lid and just, I am obsessed. My eyes are shining bright like a diamond. It looks wet and so pretty. And I'm done. See, this is my eye look.
You don't need anything else with this. It's so pretty. Guys, I just showered in this eyeshadow because it's just so pretty. Honestly, Sheglam का जो मैंने eyeshadow लिया था ना, वो तो crack कर देता है थोड़ी देर के बाद. Just because मैंने बहुत ज़्यादा apply किया है. अगर ये crack करता भी है तो I don't mind because that's my mistake, क्योंकि मैंने excitement में कुछ ज़्यादा ही लगा लिया. I'll tell you the price. I know you want to know the price. 600 rupees. इसको इन्होंने 600 का क्यों बनाया जबकि सारे प्रोडक्ट्स 300 से नीचे के हैं. ये 600 का है, बट ऑनेस्टली गाइज इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी. इट्स सो प्रिटी. मैंने मैक का आई पिगमेंट ट्राई किया हुआ है विच इज 3000 rupees. दिस वन इज बेटर देन दैट. आई एम टेलिंग यू इट्स सो ब्यूटिफुल. जस्ट गो गेट इट फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट ब्रश आई एम यूजिंग इज दिस वन, which is a spoolie angular liner brush and spoolie, and I have their In Love multi pod. I'm not using any black or brown eyeshadow. I'm just using one eyeshadow for this look. This is what it makes it even more special. I'm quickly going to, oh wow, I told you guys it's इंडिया का शीग्लैम मार्स. ब्यूटिफुल. दिस इज लाइक स्विस ब्यूटी का मैंने ट्राई किया था ना. ऊपर से था आईब्रोज के लिए प्रोडक्ट एंड नीचे था जेल आई लाइनर. इट्स एग्जैक्टली द सेम. सो आई एम क्विकली गोइंग टू अप्लाई द लाइनर ऑन माई आईज. व्हाट डू दे डोंट प्रोवाइड यू. लाइनर के लिए आई लाइक टू कोट एवरी सिंगल ब्रिस्टल ऑन माई ब्रश एंड देन जस्ट अप्लाई इट. Yep, I mess my makeup always when it looks good. I always mess it up. The liner is so black. Can someone tell what is Inglot gel eyeliner? Like whenever my eyeliner comes out to be good, that means the eyeliner is good. I'm using the powder portion just to test it out, like what it's like, and you know, you can use it like on your lashes, on your eyebrows or not. So I'm just gonna try that. It also has a small mirror, by the way, in case you are wondering. You just can't see anything in it. Yeah, so it has this plastic thing. Now you have a very small tiny mirror and you can create a very nice, just line your eyes. Beautiful. Like it has no fallout, nothing. I love this mirror also, just to let you guys know. It's so cute. Just look at that. Guys, I am obsessed with this because I just created a little bit of blending with this shadow or eyebrow product, whatever you want to call it. Yeah, it's a perfect eyebrow product, but it's a black powder, so you have to be very careful while using it because I don't really recommend using a black powder for your eyebrows. So I feel like it's more like to set your eyeliner in place in case it goes everywhere. But honestly, the eyes look really good. I'm actually intrigued to, I really want to use this eyeshadow just to create a little bit dimension on the eyes because it now has like something going on, so we just have to make the look come together. By the way, the star of the show, I must say, are the brushes. They are like too good. I'm like obsessed. I cannot tell you guys enough to just go and grab these because the brushes are like so good. You guys are gonna thank me later because they're actually really good. Alright guys, so now I know how to actually use this eyeshadow. You just need, okay, I'll tell you, on my hand you just need a dot and then just blend this. You see, you have to use it like that, or you can take like 2-3 dots and then blend it. You can build it up as much as you want, but don't apply it like I did, which was like this, like all over, and then I again keep building it up, then it will start cracking up. So this is the right way to use this pigment. I wasted a lot of it, but it was to show you how to actually use it. And I am obsessed with these brushes. I'm telling it for the 700th time. It also has a small blending brush, you guys. You can create as many looks as you want. It's so good. It's so professional. The brush set, I love it. I'm just gonna give a little bit more dimension on the eyes. And now it's the time for the mascara. For mascara, I don't have anything new. I have this Double Trouble mascara, so I'm just gonna use the step 1. I love this mascara. I love this mascara after 3 months because it just, the formula gets drier and it just is very wet in the beginning. बहुत start में आप खरीदते हो नया mascara, बहुत wet होता है ये, लेकिन थोड़ी देर के बाद it just better when the formula is dry for me. So guys, the lashes are on and I am obsessed with my skin. First of all, let me tell you, मेरे हमेशा smile lines आते हैं, जो मर्जी कर लो, but this foundation is just not
It's not giving me any smile lines, guys. मेरे हमेशा smile lines आते हैं because मैं इतने expressions बनाती हूँ. So impressed. I'm so happy. This is another product, but उससे पहले I'm gonna apply highlighter because why not? This is a shade called परांठे. सबसे पहले हम अपना काम करेंगे. मैंने शीन के lashes लगाए हैं by the way, जो मैंने दुबई से लिए थे. Amazing lashes. Now is the time for this beautiful highlighter. See, the makeup looks so professional, like crazy. It also is about the techniques that you follow, but product also matters a lot. Blending, products, everything of that sort matters a lot. Lastly, we have lips, and for that I have the whole set of lip liners. I am obsessed with these lip liners, but मेरे पास इसका दूसरा set है. ये है nude shades वाला set. I'm going to use. I'm super excited. I'm actually going to try this one. This is in the shade Choco Butter, which is a very dark brown shade. I don't know how this will look, but I'm gonna try it. Okay, I think this is going to be too dark. It's actually not too bad, but हम इससे एक shade कम वाला उठाएंगे. इसको सिर्फ और सिर्फ हम contouring के लिए use कर लेंगे. No, हम इससे एक shade कम उठाएंगे because वो बहुत ज़्यादा dark हो जाएगा नहीं तो. Alright, so this is the shade Cinnamon Roll, and I'm just going to line using this. Right, next up I have their newly launched liquid lipsticks called, yeah, it doesn't have a name on the packaging. These are just liquid lipsticks. I'm gonna like see which suits this look the perfect. Actually, this formula honestly I'm obsessed with, and this shade Rock On 02 Rock On is just perfect for this look. What? So pretty. I'm actually gonna mix a little bit of Gilded. This is another shade. This one suits it like perfectly, but I'm just gonna play a little it. Wow. The formula of these lipsticks are beautiful. ये डार्क वाला शेड जो सबसे पहले मैंने लगाया था वो उसी से मैंने हल्की सी क्लीनिंग दी है. I am obsessed, guys. Also, इन्होंने अपने लॉन्च किए हैं Candylicious lip glosses, and how can I just not try? Actually, इस लुक के साथ मुझे मैट लिप्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, बट स्टिल यू नो आपको दिखाने के लिए इसके सारे जो शेड्स होंगे वो मैं स्वॉच करके दिखाऊंगी आपको शॉर्ट्स पे. तो stay tuned and also follow me on my Instagram. This is the shade called 03, and I'm gonna just try it out. I don't want to, but I'm gonna just try it out for you guys. Oh yes, it's stunning. It is beautiful, you guys, and this is not sticky. It's more so like a lip oil. So beautiful. I'm gonna switch back to matte lips and I'll be right back. So yes guys, this is officially the final look. Let me know what you guys think of this hair also. I am obsessed with this look. Honestly, it looks super professional. It looks like you have done makeup with the very high-end product. But I just used Mars Cosmetics, guys. And अगर आपको इसके lip glosses के lip swatches देखने हैं, then stay tuned because मैं इसी look के साथ ये lip swatches अभी के अभी swatch करने वाली हूँ. पर आपको वो दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा. Let me know what you guys think. This look looks amazing. By the way, these earrings are from Shein. I got them from Dubai, guys. ऐसी चीज़ यहाँ से मिलना is like difficult. Yes guys, this is the final look. Let me know what you guys think. I absolutely love it. I love the hair. The makeup looks super professional. Everything, the lipsticks, the blenders, the everything, the lip glosses. If you want, I will swatch them for you guys in next video. मतलब कि shorts में आपको देखने को मिल जाएगी. But the star of the shows is the brushes. Brushes are so good. In fact, the foundation, it is not giving me any smile lines. Trust me guys, it's beautiful, and I just cannot wait to create more looks with these products. So yes, if you enjoyed this, all the products will be linked in the description. Go and check them out. Love it. I love my hair also. I just curled it and थोड़े से मैंने पीछे करके मैसी सा कुछ बनाकर कुछ तो create किया है. Let me know what you guys think of that. Should I create more of such hairstyles also? Let me know. So yes, if you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel below, and I will see you next time.